Okay, so let's quantify this skin effect or skin depth phenomena. So formally मैं इसको मैं define कर लेता हूँ and then we can look into the details. We will use symbol for this parameter इसको हम represent करेंगे delta S के साथ. So this is the symbol that we will use for skin depth. What is skin depth now? Formal definition इसकी क्या होगी? So it is the distance traveled by the wave or signal until the amplitude of the fields is decayed, or you can call it reduced by one over E. And actually this 1 over E is equal to 0.368, or in percentage wise फिर इसको हम कहते हैं 36%. This is the formal definition of what is skin depth. So whenever wave penetrates a lossy media, its amplitude will reduce. So if the amplitude at the surface of the lossy media is taken as a reference, so whenever that amplitude reduces by 36.8% or almost 37%, whatever distance the wave has traveled, we can call that distance as skin depth. Okay, so let me give you a graphical representation of this phenomenon. So if we assume that there is this lossy media, which is good conductor, let's say, let's assume that this is Z direction. So wave is traveling in the Z direction. So there is a wave and that is traveling in this media, which is lossless, and then it enters this media. So the wave amplitude, or the expression that we have used by finding the solution, the wave that is traveling in the positive direction is represented by E plus, let's say, E power minus alpha z and e raised to power minus j beta z. So this factor is the amplitude. This is the amplitude part of this expression. Let's assume कि यहाँ पे आपके पास z equal to 0 के, this is z equal to 0. It means कि इससे साइड पे अगर हम तो नेगेटिव z डायरेक्शन में और यहाँ पे हम पॉजिटिव, और ये जो मीडियम गुड कंडक्टर है ये इसकी सिर्फ इसकी जो आप कहते हैं स्टार्ट जो है वो यहाँ से हो रहा है, इस जगह पे वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, इट विल बी ई प्लस, ओके, एट दिस पॉइंट, क्योंकि आप z को 0 पुट करेंगे तो
अब जब वेव इस मीडियम के अंदर एंटर होगी तो ऑफ कोर्स अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ई पावर माइनस अल्फा जेड के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन हम चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करें, लेट्स अज्यूम कि ये वो डिस्टेंस है जिसको मैं अगर आप कहूँ कि ये स्किन डेप्थ, तो ये अगर डेल्टा एस होगा, इसको डेल्टा एस कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा जेड, ये वेव जब यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आएगी, हम चाहते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना रिड्यूस हो जाए। इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे ई प्लस था जिस तरह मैं कह रहा था, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए ई रेज़ टू पावर माइनस वन होना चाहिए। वन ओवर ई मीन्स के ई पावर माइनस वन। सो एम्पलीट्यूड हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम, इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड ई प्लस था, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, इसके पास का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ई प्लस ई पावर माइनस वन। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.368 इंटू ई प्लस। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको अगर आप देखें, वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, ई प्लस इंटू ई पावर माइनस। सो इफ आई वांट के ये ई पावर माइनस अल्फा जेड किसके बराबर हो जाए, ई पावर माइनस वन के बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि हाउ मच शुड बी जेड, जेड जो कि हमारा डिस्टेंस, जेड जब कितना होगा, जेड जब वन ओवर अल्फा के बराबर हो जाए, जब जेड वन ओवर अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, ई प्लस ई पावर माइनस वन जाएगा। सो जेड हैज टू बी इक्वल टू वन ओवर अल्फा। जब जेड वन और अल्फा के बराबर हो जाएगा तो वेव का एम्पलीट्यूड कितना रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ स्किन डेप्थ इज। इसका मतलब है कि ये जो जेड है, जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा स्किन। सो स्किन डेप्थ किसके बराबर होगा हमेशा, it is going to be equal to 1 over alpha, and you already know what is alpha. Alpha is the attenuation constant of the medium. So हमारा जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, गुड कंडक्टर है। सो हाउ मच इज द एटेन्यूएशन कांस्टेंट फॉर गुड कंडक्टर, सो पिछले सेशन में हम फाइंड कर चुके हैं इसको, कि गुड कंडक्टर के लिए अल्फा और बीटा दोनों बराबर थे, और किसके बराबर थे, ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 200। दिस इज समथिंग व्हिच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। तो अल्फा इसके बराबर है। सो इसका मतलब है कि स्किन डेप्थ जिसको हमने फाइंड किया कि स्किन डेप्थ हमेशा इसके बराबर होगा, वन ओवर अल्फा। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट। So delta S is equal to 2 divided by omega mu sigma under the root. So this is the expression that we can use to find out के कितनी skin depth होगी। Sometimes इसको हम एक और फॉर्म में भी लिखते हैं, because we know कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 pi f। So based on that आप इसको लिख सकते हैं 1 divided by pi f mu sigma under the root. So it's up to you कि आप ये expression use करना चाहते हैं, but general expression is this. So what we can identify from this expression of skin depth is कि skin depth depend किस चीज के ऊपर करती है। So skin depth is inversely proportional to frequency. The lowest is the frequency of the signal, the more is going to be the skin depth. And more skin depth mean that signal will be able to travel a long distance inside any conductor. So अगर स्किन डेप्थ ज्यादा है, इसका मतलब है कि
हमारा सिग्नल ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगा until its amplitude is reduced by this. So the lowest, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी स्कैन डेप्थ ज्यादा होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी स्कैन डेप्थ कम होगा. So high frequency will not be able to penetrate a large distance inside a good conductor. And the other thing we can identify is that skin depth is inversely proportional to the conductivity of the medium. If medium is not that much conductive, so skin depth will be more. And if medium conductivity is more, it means conductivity, the skin depth will be less. And it's obvious.